Hi guys, today we will learn about the four pillars of OOP. तो बेसिकली क्या है, याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, अ पाई याद रखो, अ पाई, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन, ए फॉर एब्स्ट्रैक्शन, पी फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, आई फॉर इनहेरिटेंस एंड ई फॉर एनकैप्सुलेशन। लेट्स बिगिन विद द एब्स्ट्रैक्शन। Now let's begin with abstraction. So abstraction अगर आप देख सकते हो तो basically let's say our class had multiple methods and multiple variables and all. तो उसमें से हम लोग थोड़े ही दिखाते हैं बाहर, जितना यूज़र को necessary उतना ही. We don't show anything which is not required. So that is abstraction. ऐसा समझो कि we have a coffee machine and our coffee machine के background में there are three methods. अपने को सामने दिख रहा है सिर्फ make coffee button, ठीक है, and then उसके पीछे जो है it's running three different methods, private methods, ठीक है. लेट्स से ऐड मिल्क, ऐड कॉफ़ी, ऐड शुगर वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है. तो इन एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली हमको क्या दिख रहा है, बस मेक कॉफ़ी, ठीक है. वी आर जस्ट प्रेसिंग दैट पर्टिकुलर बटन और दैट कॉलिंग दैट पर्टिकुलर मेथड. सो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन. बेसिकली सिंपलर इंटरफेस देता है एंड इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एज वेल. सो दैट इज़ ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन. Now let's move forward with polymorphism. Now what is polymorphism? So polymorphism is basically described as two words, poly and morphism. So poly in the sense there are multiple and morphism is forms, so there are multiple forms of a single thing. So basically अगर समझो अपने पास एक क्लास है शेप नाम का एंड विच इट हैज़ अ ड्रॉ मेथड. तो अगर अपन सर्कल नाम का एक एक्सटेंड करते हैं इसी शेप को, ठीक है, तो basically what we are doing is, and now what we can do is we can override that particular method in this particular circle class, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है, वी आर हैविंग द सेम मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है. इसको इसी को बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग. तो ड्रॉ को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर राइड कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग दिस एज ड्रॉ अ सर्कल इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ शेप. तो अब जब अपन इसको रन करते हैं, सिमिलरली फॉर ट्रायंगल ऑल्सो वी हैव डन द सेम थिंग. तो अब जब अपन इसको रन करते हैं ना, तो बेसिकली इट विल प्रिंट अ सर्कल एंड अ ट्रायंगल, इट विल नॉट प्रिंट द ड्रॉइंग अ शेप थिंग. Why? Because we are overriding the methods, and that is polymorphism in simple language. Okay, and the important part is look at the two lines. So we are actually having shape over here, ठीक है. अगर आप देख सकते हो, we are not declaring it with a circle, we are instead declaring with the shape. So that is what we need to remember. Again, let's move to inheritance. Inheritance is also a very simple thing. Let's move to here. ओके, तो इनहेरिटेंस में क्या कर रहे हैं अपन, तो बेसिकली इट्स समथिंग लाइक ओके, वी आर इनहेरिटिंग समथिंग. अब एक पेरेंट क्लास है विच इज़ एनिमल, ठीक है. एनिमल, सारे एनिमल्स खाते हैं, तो वी हैव अ कॉमन मेथड. सो एनिमल इज़ ईटिंग, ओके. एंड नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज विल क्रिएट अ डॉग क्लास, ठीक है. डॉग क्लास क्या करता है, एक्सटेंड्स एनिमल बिकॉज इट्स ऑल्सो एन एनिमल, राइट. तो अब इसमें क्या करते हैं अपन, वी विल ऐड अ मेथड कॉल्ड एज बार्क, ठीक है. नया मेथड क्या है, डॉग क्या करता है, बार्क करता है. But this thing is also going to inherit properties from the previous parent class which is eat. तो अगर अपन इसको directly eat बोलते हैं ना, तो we are not declaring anything over here, but if we say eat, it is directly going to inherit that as, so therefore it will print animal is eating. The important part is class dog extends animal. Dog is an animal, so dog gets the things that animal has, so it inherits what the animal has. So this is all about inheritance. Now let's move to the encapsulation. So encapsulation in other words is basically like let's say we have some few variables, okay. Let me show you. Alright, so in the traditional programming, for example, we have declared some variables and we have a method which calculates and which has parameters, ठीक है. तो ये बाकी जाके calculate करता है. But in case of OOPS, if we are implementing this, right, some of the things like base salary, overtime rate, तो ये सारे variables है. We don't want other users to access it directly. We want them to access it through our methods, okay. तो that is how we can get like यहाँ पे देख सकते हो the get wage and it's calculating and just returning this. So we don't have to do any calculations, or we don't have to pass in any variables or anything. We just do dot get wage and it gets us the answer. So this is one example. But अगर समझो base salary, let's say there is a class called as bank, okay, bank account. So उसमें we have particular variable as salary, ठीक है. So we don't want users to get directly that salary from that particular variable. We don't want them to access it directly. We want them to access it through our method, like a get salary method, ठीक है. तो उस so that we, you know, we have the capability of like logging it maybe, or maybe giving restricted access to it. So that is how we can use, you know, encapsulation for this purpose. So I think that covers up the whole thing for OOPS.
ओके, सो एज यू कैन सी आई हैव गॉट अ फ्यू नोट्स लाइक OOP बेसिकली यहाँ से आप रीड कर सकते हो ये चीज़। एंड देन ओके, कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग क्या है, मेथड इट्स फंक्शन बट प्रेजेंट इन अ क्लास, ठीक है। दीज आर द नोट्स आई हैव टुक इन इंजीनियरिंग टाइम। सो मेथड ओवरराइडिंग, सो मेथड ओवरराइडिंग हैज़ दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। फिर सॉरी, मेथड ओवरराइडिंग को नहीं बोलते हैं, इट्स इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड देन वी गो अहेड इन मेथड ओवरराइडिंग, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। दिस इज दिस, देन वी हैव ऑल द डिटेल्स लाइक इनहेरिटेंस, मेजर फीचर ऑफ OOPs वगैरह वगैरह। इनहेरिटेंस में अपन कैसे इनहेरिट करते हैं व्हीकल को, कार वगैरह, एंड इसको अलग अलग चीज़ें, ठीक है। दिस इज़ अबाउट दैट। एंड देन इनहेरिटेंस हैज़ पर्टिकुलरली 5 फील्ड्स। तो हम लोग जावा में ये 3 फील्ड्स यूज़ करते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, sorry, hierarchical inheritance. We use 3 in Java. Then multiple inheritance and hybrid, maybe the C++ supports these both, okay. Then we have सब क्लास एंड सुपर क्लास, ये तो आपको पता ही होगा। जिस जो क्लास पेरेंट क्लास रहता है वो सुपर क्लास रहता है, और जो उसको इनहेरिट करता है वो सब क्लास रहता है। इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट। सो डिस्ट्रक्टर, जावा यूजेस गार्बेज कलेक्टर, सो वी डोंट हैव द डिस्ट्रक्टर। एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म में 2 टाइम के होते हैं, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। एनकैप्सुलेशन का भी डेफिनेशन दिया है कि रिस्ट्रिक्टिंग यूजर्स टू डायरेक्टली मैनिपुलेट डेटा मेंबर्स एंड इंस्टेड एक्सेस देम वाया पब्लिक मेथड्स कॉल्ड गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग इररेलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द यूजर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, देन एक्सेस मॉडिफायर्स, ये वगैरह तो आपको नहीं लगेंगे। सो या दैट इज़